Hi friends, this is Parveen. I'm based out of India and this is my first video on YouTube as I'm starting my own channel. My videos are going to be about self-development, learning how to learning foreign languages, business development, communication and technology. I'm also interested in health and finances, that means how money works. To learn about new topics and to enhance my knowledge about new, existing topics, I like to read books apart from gaining knowledge from other resources. So every now and then when I'm going to complete a book, I would like to present a summary of that also. Specialty of my videos is going to be that they will be in foreign languages and they will be actually in 7 languages. So I currently speak 8 languages. These are, apart from English, which I speak right now, German, French, Spanish, and Portuguese in terms of foreign languages. And then in terms of local languages, I speak naturally Hindi and I speak Punjabi as well. And Haryanvi is my mother tongue. For international viewers, so Haryanvi is the language of my state, Haryana. So every state in India has its own language, almost every state. In this video, I'm going to speak partly in all of these 8 languages. Going forward, I'm going to record videos in 7 languages. And Portuguese, I'm going to leave on side for the time being, as I don't give myself more than 6 to 7 out of 10. And unless I can give 9, so I don't consider that to be fit for producing videos for public consumption. And that might take 3 to 5 years as well. It's not a priority for me as of now. I'm going to switch to German now to talk about my local languages. Also als ein Inder wird es leicht von mir erwartet, dass ich Hindi spreche, und natürlich das tue ich auch. Ja, ich spreche Hindi. Aber Hindi ist die Sprache, die ich nicht seit der Geburt gelernt habe. Also in meiner Kindheit habe ich immer die Haryanvi als dominante Sprache gesprochen. Wie ich schon gesagt habe, dass jeder Bundesstaat in Indien hat seine eigene Sprache, fast jeder Bundesstaat. Und mein Bundesstaat liegt im Norden von Indien. Also mein Bundesstaat umgibt unsere nationale Hauptstadt von 3 Seiten, also ganz nah von Delhi. Und dann, ich bin auf dem Land geboren und Haryanvi wird besonders auf dem Land geboren, in den Städten auch wird es gesprochen, aber ja, vorrangig wird es auf dem Land gesprochen. Und dann, ich bin in einem Dorf geboren, gewachsen. Dort habe ich die Grundschule, Kindergarten und Grundschule gehabt, und dann hat man da 100% Haryanvi gesprochen. Und dann, Hindi war Teil, mein Ausbildungsmedium, und auf diese Weise habe ich schrittweise die Fähigkeit für Hindi auch entwickelt. Und das Komische daran ist, dass ich vor dem Alter von ungefähr 7 oder 8 Jahren habe ich kaum Hindi gehört. Also dann war es zum ersten Mal, wann ich Hindi im Fernseher gehört habe. Die andere Sprache, die ich wirklich gelernt habe, die ist Punjabi. Die wird in dem Bundesstaat von Punjab gesprochen. Das ist mein Nachbar-Bundesstaat. Und Haryanvi wird von mehr als 20 Millionen Personen gesprochen, aber Punjabi dahingegen wird von mehr als 100 Millionen Menschen gesprochen. Punjab befindet sich in Indien, also auch sowohl in Indien als auch in Pakistan. Okay? Und dann auf diese Weise gibt es mehr als 100 Millionen Menschen, die Punjabi sprechen. Also auf diese Weise habe ich Punjabi wirklich gelernt. Dann habe ich nach dem Alter von 20 Jahren, als ich in Punjab gelebt habe, da habe ich mein Bachelorstudium abgeschlossen, und dann habe ich mir Mühe gegeben, die Sprecher beobachtet, ihnen zugehört
und dann auf diese Weise habe ich die Sprache mir angeeignet. Also in Zusammenfassung würde ich sagen, Punjabi wirklich gelernt, Hindi teilweise erlebt, teilweise gelernt und meine Muttersprache ist Haryanvi. I'm going to speak in French about my English journey at a high level there. Alors, quand je suis allé faire ma licence en ingénierie mécanique, là, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui parlaient relativement mieux anglais que moi, parce qu'ils venaient de familles où on parlait peut-être anglais, où la famille avait, leurs parents étaient professionnels ou quoi. Mes origines, en fait, n'étaient pas comme ça. Je venais d'un village et il n'y avait pas, en fait, on avait la manque d'éducation. Et voilà, à cause de ça, en fait, je ne parlais pas vraiment même 2 phrases d'affilée correctement. C'était le cas pour moi. Et pour réussir, après faire la licence, c'était très important de parler anglais pour obtenir un travail ou réussir dans la carrière aussi. Parce qu'anglais, c'était, voilà, ça devenait une langue internationale et aujourd'hui, on peut regarder ça aussi. Puis, on a discuté entre les camarades de la classe, on a planifié des choses de discussion en groupe et tout ça, et on a acheté des dictionnaires. Et alors, on a commencé avec ça. Dans 2-3 ans, j'avais atteint un bon niveau en anglais et en particulier, j'ai fait l'attention sur la phonétique britannique. Normalement, en Inde, on parle avec un accent différent et pour moi, c'était la priorité d'internationaliser ma manière de prononcer les mots. Okay? Alors, dans mon anglais, on a constaté ça aussi. Et voilà, c'est tout sur anglais. Et now I am going to speak in Spanish about my foreign languages journey, again at a high level. Entonces, después de hacer mi licenciatura, entré en el mercado de trabajo, pues necesitábamos tener éxito con esto también y ganar dinero. Obtuve el trabajo con una empresa de acero y ahí reconocí la importancia de aprender idiomas extranjeros. Y comencé con coreano, pero después de poco tiempo tuve el problema con los recursos, entonces discutí con mi jefe, gerente general, director general, y él me dijo que pues preguntó si me gustaría considerar aprender los idiomas europeos, pues me sonó interesante. Entonces dije que pues me gustaría hacerlo también y pues él me indicó una escuela, pues Max Müller-Born, para aprender alemán en la ciudad de Mumbai. Mumbai era 150 kilómetros lejos de donde estaba trabajando. Pues para mí eso no era posible ir ahí durante el fin de semana también, porque 6 días por la semana estábamos trabajando en la industria de fabricación, pues la semana laboral consiste en 6 días. Consistía en esos momentos. Hoy tienen un poco de flexibilidad ahí, lo que sé. Entonces, para mí era importante si tenía los recursos para estudiar, porque ya tenía la experiencia de aprender inglés como un autodidacta, entonces tenía confianza también. Él me dijo pues que hay una calle en la ciudad de Mumbai donde se podían comprar los libros usados. Entonces fui ahí, compré los libros, pero no solo para alemán, sino también para español y francés. Entonces así comencé mis idiomas extranjeros 3 en paralelo y el día de hoy puedo hablar estos idiomas con alto nivel. Okay, now I'm going to speak in Portuguese. Portuguese is, as I mentioned, I don't give more than 6 or 7. I'm conversational, a little bit at ease, but there's a lot more work to be done in that.
Então, em 2017, o meu chefe me encarregou com a tarefa de recrutar um membro do nosso time para português. Então, eu não falava português, eu falava só espanhol. Então, aceitei este desafio porque me interessava. Então, comecei com estas entrevistas e depois alguns candidatos selecionamos um candidato que falava bem português. Ele morou em Brasil por alguns anos e então quando ele ingressou ao nosso time, lhe pedi que fale comigo em português. Então começamos assim. Eu falava em espanhol e ele falava em português. Então por um mês continuamos a falar assim e depois me mudei a falar português. Então 3 ou 4 meses depois podia falar português muito bem. Tinha também uma reunião com dos clientes. Então that's the journey of my Portuguese. And now of course I'm going to speak in let me speak a little bit in Hindi now. So so Hindi is natural. तो हिंदी तो सीधी सी बात हम बोलते ही हैं और जैसे कि मैंने बोला शुरुआत में कि हिंदी कभी बचपन से बोली नहीं है, पर स्कूल में सीखी, स्कूल में उसका बेस मिला और उसके बाद में जो धीरे धीरे उसको बोलना स्टार्ट किया। 15 साल की उम्र तक तो कभी बोली ही नहीं थी और उसके बाद में जो वातावरण मिला उसका बोलने का, तो उसके बाद में बोलना स्टार्ट किया जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी। तो नेचुरल सी बात है और ये इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए है जो कि ये देखना चाहेंगे कि ओके हिंदी बोलते हैं, पर अगर हमारे इंडियन व्यूअर्स को तो पता ही है अभी हिंदी तो नेचुरली बोलेंगे ही, बिल्कुल उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके ते हुण मैं नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक इन पंजाबी actually. So again that's for the international viewers so that they know which language I'm going to speak in. ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ 3 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਓਪਟੀਮਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵਲੀ ਲਰਨ ਕਰੋ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਲਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੋ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡੂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਐਜ਼ ਇਫ ਨੋਰਮਲ ਆ। ਓਕੇ ਨਾਓ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਵੀ and which is my mother tongue. तो गमा बड़े थे भी, गमा पैदा हुए भी, गमा जामे बड़े खेती वाला काम था पेरेंट्स का। तो खासकर शुरू में तो कभी यही भी ज़्यादातर के होया पेरेंट्स ना काम तो करया चोखा करया, पर न्यू है भी ज़्यादा ध्यान पेरेंट्स ने न्यू कहा भाई पढ़ाई पर दे ले, क्योंकि घर में तो एजुकेशन थी नहीं, किले कल भी ठीक ठाक ही थे। तो एक ज़रूरत भी थी, एक शाबते और एक मोटिवेशन भी मिलती रही भी पेरेंट्स ना वहाँ कंधे रहे भाई पढ़ ले कुछ। और इसका न्यू फायदा होया मना भाई थोड़ा सा संघर्ष भी था ज़िंदगी में, और उसका न्यू फायदा होया मना भाई एक अपने आप के भीतर झांकने का मौका मिले उस संघर्ष के कारण। और उसी के कारण ही मैं इतनी लैंग्वेज सीख पाया क्योंकि मैं लग्या रहा। जो मैं किसी कंफर्टेबल नौकरी में होंदा, सरकारी नौकरी लग जाता या ऐसा ही कुछ होंदा, ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ थी, तो मैं शायद इतना नहीं कर पाऊँ था जितना मैंने आज कराया।
तो एक संघर्ष का इतना जरूर फायदा हुआ भी आदमी एक कहीं ना कहीं जो एक सकारात्मक सोच रखा है ना, वो कड़ी ना कड़ी फिर अपने आप ना एक ढूंढ है भीतर ते भी हाँ मैं के कर सकूं, के तरीका होना चाहिए मेरा, एक अपने अपना बदलाव भी लिया जिस तरह जिंदगी आगे चला है। वही मेरे गलो है, बहुत कुछ सीखा, मैं बहुत धन्यवादी हूँ जो भी मना अपना एक्सपीरियंस मिले हैं अपनी ज़िंदगी में। और अग्गा भी मैं अब लग रहा हूँ, लगातार अभी भी रुकया नहीं हूँ। और बस आपके सबके खातर मैं ज्ञान लेना चाहूँ और मेरे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ। और ख़ासकर जो मेरा स्कूल मैंने जर्मनी के टीचर गिला स्टार्ट कराया है, तो उसके थ्रू मैं एक बहुत बढ़िया कोस्ट पर एक इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी देना चाहूँ लैंग्वेजों खातर। Now I'm going to switch to English again to conclude the video, and that was all an introductory demo in different languages. And I thank you very much for giving your attention and time to listen to, and then thanks in advance for sharing, liking, commenting as well. And thanks for your support, and looking forward to see you in the next video. Bye bye, and take care of yourself.